for me, the journey was a bit different because I didn't organically come over here like this and search for the GSoC ideas. I was actually working on open source a lot. So if you can see my profile, you can, if you guys want, you can look through my profile as well. I'll just give you my username because this username is available everywhere on all the platforms. If you want, you can look through my projects also because I do a lot of open source work. So my journey started by making a few libraries. So, like for example, this is one library that I made back in December 2020, I think. So this library was very helpful for me. Like this is an open source library. This has nothing to do with GSoC. So I started making stuff like this. So there are other libraries that I made mainly for easing my own Android development work. So if you are an Android development, you can relate to these libraries if you check out my profiles. So after that, I wanted to develop a personal project where maybe I could leverage something like a top 100 billboards. I wanted to showcase in one of my personal projects. But as I started seeing everyone had like paid plans, even Spotify's API was not allowing me to do this stuff on my app. They first had me do their auth on the app. So I didn't want that. I just wanted one page where in my personal app I could have something like that. So I basically needed a database to provide me those things. So that's when I encountered this app, Music Brains app, and I was just working on it for my own sake. It wasn't that it was for GSoC or not. I didn't even know that this was a part of GSoC. And if you even go through the MetaBrains Foundation's technologies over here, they don't mention Android or maybe Java or Kotlin or anything. So you could maybe miss out on projects because of just focusing on this. The best part would be if you are really interested in an organization, go to their website, look through their projects, what all projects they have, and see if anything could interest you. And not just that, you need to even connect with the organization after that. Like for example, I'll give a short example. Like people have Discord servers, you have Slack channels. So the same way we have an IRC channel for MetaBrains, which even Rick is a part of. So if you want some help setting up on how to start with IRC channels, you could take help from him. And I'll show you a basic demo of our channel as well. So this is our channel where we talk about almost everything. So if you have any doubt, even you can just come in over here, introduce yourself that hi, I am Rick and I am very interested in this XYZ project and I would like some help setting it up so that I can proceed with the development. See, like Rick is very active over here. Even you can see his work. So we all participate over here only. Like currently, I'm an employee for the organization that I was a part of. This happens rarely, but after GSoC, they wanted me to join in and contribute even further. So since I'm in my final year, so I do have like I work part time, but I'm basically a part of the team now. So even you can have such opportunities if you're really invested in the project because uh, the the work is very simple and clear that we want people who will be interested in the projects even after GSoC. So as we all know, GSoC is just a program for 2 to 3 months. Once your project is done, most of the people they stop contributing. And to be honest, just for the tag, GSoC isn't that big of a deal also. Like currently I'm a GSoC, it doesn't change my life. It was just a one-time thing and you get the stipend also. So the stipend is great. So, but don't do it for the stipend or just for a one-time tag. GSoC is to promote you towards open source so that you can keep on contributing. So you can So, can you please explain what GSoC is? there is a lot of noise in your background. Yeah, can you explain what GSoC is? GSoC is basically Google Summer of Code, where basically Google sets up, like you can see the timeline over here. I'll show you the timeline. That'll be better for you. Yeah. So
Basically, what happens is mentoring organizations can begin submitting applications to Google. So even the organizations that are a part of GSoC, they have to apply. So like just 2 days back, our organization applied for GSoC. Just the same way students apply, pehle, the mentoring organization will apply and then they will be selected. So it can be possible that the organization that you're looking for will not get selected. But as I said, 90 to 95% of the organizations are repeated. So first they will apply to Google that hey, we want to take part in GSoC because we are open sourced organizations and we want some people to help us scale our work. Because open source organizations don't have a commercial model, they don't earn like billions of dollars. So that's where the difference comes in. Like even in our organization, in MetaBrains, there are only 10 to 11 employees. The whole like we have over 7 projects and the amount of work is huge. But still, we have only 10 to 11 employees because most of the work comes from volunteers and through programs like GSoC. So once you are a part of GSoC, you will be contributing towards the organization, right? So basically, in layman terms, think of it like you are basically being an employee for 2 months. Think of it that way if you want to put it in a like easy terms. So that is why these organizations are interested in the work which will benefit uh, their stuff as well. So if you are taking a project maybe for an Android app, because no one is currently working on this right now. So even right now, like I worked on this last year a lot. Even right now, I do work like here and there, but no one is managing and fixing the relevant bugs as of now. But if you guys come in, say that you are very interested in GSoC, so you will spend almost three to 4 months of your time in fixing these bugs and maybe implementing new features which will be beneficial for us because you will come and go but this app will go on. So we want more and more features which will be relevant for us. So what happens is after like every GSoC, so last year I worked on this, then I added the roadmap for the next person to come in. So these are the relevant features that we want in the app. So if you guys come in, if you are interested, you can work on these features. Same way goes for the other projects as well. I'm just being biased because this is a very good example for me right here. So if you guys come in, you can work on these features which will be helpful for us. That is why the organizations first they take part. So they will apply to Google and after a while, this application deadline and then Google reviews. Then list of mentoring organizations will be published on March 7th, and then ideas will be discussed, and then your applications will begin as students. Now you will start applying for this GSoC program where you'll have to submit a proposal. I'll also show you the proposal as well. So you have to be in touch with the community. So we have a forum. So like this, every like community has their own forum or Slack channel or wherever. Over here, they asked us to first submit uh, natively for the organization itself, the proposal. So, like you can see my proposal as well from last year. This is the same exact thing which I put in Google as well. So there were around 7 iterations of it. So I made something that I'll do this, that, and then I gave a timeline also for 10 weeks because the program was for 10 weeks. So how am I going to utilize those 10 weeks? I had to mention those, and then some personal details as well. How many hours can you work for the project? And then if you see, like my potential mentor at that time, he reviewed the proposal and he gave me suggestions as well that your proposal looks good, and he requested some changes. So that is when you have to like follow their path also because they are going to be the mentors. So you have to work according to them basically. So after a while, I discussed with him and I made the changes. So it was very organically done that you already know that once you're on the right track, things will go your way. You don't have to worry about it. Makes sense? That you already have taken the feedback from the people, and then you are like, they already know what you're going to send.
even on the IRC channel, I had a lot of talk that, should we implement this feature or that feature? Because even if you see over here, a lot of features have been mentioned. These will take a while. These might, like, even one feature might take like 2 months. So, what you need to do is you need to come to me once you go through this, and then you have to discuss with me over here. Hi, Akshat. I think that maybe we should. Like, I was thinking of taking part in GSoC. So, what features are of high priority for us? Basically, what features would you like me to work on? Or you can suggest that, I recently worked on a TV support app. I recently added TV support to an app, so I can do this. So this will be good for me. So I'll add this to the proposal and something else also. So we can discuss that accordingly, and then you can finalize your proposal. So things are clear that first organizations apply, they get selected, then students apply, then they get selected. So see, mentors are limited. There are around 200 organizations that take part in GSoC, and every organization will have around 5 mentors, 5 or 6. Yeah, take it 6. So that is why it comes around that around 1200 or 1300 people are only selected. That is the reason. So what you need to do is you need to find your mentor, potential mentor. So it won't be finalized to you. You won't even know who is going to mentor, but you can have a talk on the RC channel and understand what's going on, and then connect with the mentor, see what it is all about, so that it's very clear that they want your project only. At times, there can even be that there are 3 to 4 people who want to work on a single project, but their features and ideas are different. So that is when some competition comes in. So that is when you will have to talk with the mentors properly and understand what their needs are currently. Like a few days back, a person wanted to work on a project called Critique Brains of the MetaBrains Foundation. So we discussed that. So he was basically just doing things on his own. That I am interested in this project, I'll just fix bugs and all. But then after a while, when we discussed, we were like, we won't be taking forward Critique Brains for GSoC because it's not viable for us at this point. But if you could maybe tweak things in from Critique Brains to maybe other projects like Listen Brains or Music Brains, something like that, if you could add in those functionalities over there, then we would like your project. So basically, that person is a good guy, but he spent around 2 to 3 weeks working on something which won't be of benefit for him in terms of GSoC. So if your plan is GSoC, be clear. Don't just abruptly come in and, hey, I want to take part in GSoC. Don't be like that. Work for a while on the projects. Do your own research. See the projects. Like last year's projects, if you see for my organization, let's go back a bit. Yeah. So last year there was an Android app. So this Android app is still available if you want to take part in it. There was some work done in Listen Brains. So this, like, Listen Brains is also going on. If you want, you can suggest more things. Book Brains is going on. Even like you can suggest for this also. Music Brains APIs are going on. So these projects will continue until unless it's just one time feature. So I would assume that these are like one time features, but like I was working on the app completely. So I was revamping the whole app and bringing about changes. So this app as a whole will continue. Maybe this one time features won't continue. Like you can't continue one time features, but the projects will continue. The projects which got these features will continue. So pick your organization, look through the previous ideas, and then see what's good for you. Talk with the community. Then see, go in this manner. Select organization, go through the projects and the website and everything. Understand what they're about. What is it good for you or not? You can even have like 3 or 4 organizations in mind. That's not a problem. But talk to them. At the end, you'll get selected only for one project. So you have to see where you're more interested in. So maybe if they have an IRC channel or some mailing list, join it, see their blogs, talk to them,
talking to them is very important for those who are potentially looking for GSoC this year. In a month, you have to be familiar with them, because already, like, I would suggest that by February only you should have introduced yourself, started working on something. But take it by March, you need to be familiar with them and then start discussing what all things they are interested in, so that you both can come on common terms for what to do. Any doubts till now? Yeah, yeah, go You ahead. can ask your queries, guys. Actually, I want to ask like how should we choose organizations? Like you said, you are already contributing to open source. Then it means that it was not the kind of choice you made. Like what organization you wanna Yeah, that was a contribute to bit in unique GSoC. for me. Yeah, that was a bit unique for me, but I have had friends. So, what basically, like, see, if I'm being honest, when I was in my first year, I did hear about GSoC. That, it's a big thing. You can, stipend milta hai, ye hota hai, wo hota hai. But, like, I was skimming through this, but at that point, I couldn't find. But if you have some, like, suppose you work on React a lot, now you want to see that where should I, like, I know React and I want to be a part of GSoC. So what should I do? Maybe if there is something with React, yeah, if you just, yeah. So you can just use this search functionality. That's the easiest method for you. That, just search for the things. Like, the guy was working on Java, right? So he can just go with Java and then Anki Droid. This looks good to me. I think I saw this also last year only. Even I was just skimming through this. Like, you will have to spend around probably 2 to 3 days. 2 to 3 days, full days. Matlab, you come here, you go through everything. Like, I opened each and every organization. I remember. Actually, sir, to be very frank, I already visited this site. I'm in first year Hmm. too. But when we visit the organizations, right, there are many technologies they have already mentioned. And Hmm. in that case, if I am knowing that only one kind of technology, like if I presently I'm in first year and I know C, C++, Yeah, yeah, and that's I'm a good started point. with web development, and it's like HTML and CSS only. So is it good that I will start right now, or I should be probably aiming for next year? Like, see, if your plan is that you should know everything, that's not the case. Like, even for this Android app, all I knew was I had built a few Android apps, but I didn't know this architecture. These people currently have, like, they use a dependency injection and the MVVM architecture. I knew about the architecture a bit, but I didn't know how to use dependency injection in this, and this whole code base was a bit different for me from my usual apps. So even with the proposal out, the proposal had clearly mentioned that, I'm going to do these changes, but it's not like I can have these changes. If you even currently see the app, some of the changes couldn't be made because they weren't, like, possible to be made. But you shouldn't do that. You should be very clear that these changes will be made. Like, you can get these changes done. You should have that much clarity. But it's not necessary that you have to know Kotlin completely, or if you only know Java, you can learn Kotlin on the way. You need to prove to the organization that you can learn it. How do you do that? By making pull requests. So before your proposal is reviewed, you need to have at least 3 to 4 pull requests merged. Try to aim that. Pull requests can be very easy also. Like, a few days back, a person is trying to fit into GSoC currently. So they made a few changes. Like, I can show you. Like, they are very basic changes. Like, three to four lines. Okay, 3 to 4 lines of changes, but they were discussing with me over this on IRC also. Even though changes might be like 3 to 4 lines only, you can have a lot of discussion about it. I reviewed a few things, I gave them some feedback. So this is how you need to go about things. You can learn on the way. You don't have to know एक्सक्यूज मी सर. everything. Yeah. सर जैसे मैं जैसे मान लो हमने वेब डेवलपमेंट सीखी है तो हमने लाइक आई मेड अ चैट ऐप एंड ए सिंपल ई स्टेट वेब रियल एस्टेट ऐप
सो आई वाज अबाउट टू आस्क कि अगर हम अपने जो प्रोजेक्ट हम बनाते हैं फॉर अ प्रैक्टिस, और जैसे कि हम टेक्नोलॉजी सीखने टाइम जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वो प्रोजेक्ट हमारे ये जब हम जी सॉक में मेंटर से बात करते हैं, या उसमें कोई इसका इनका रोल होता है कि नहीं होता? कोई रोल नहीं। देखो, जीसॉक में तुम्हारा कोई कॉलेज नहीं पूछेगा, कोई ब्रांच नहीं पूछेगा, कोई जेंडर जेंडर भी नहीं पूछेगा, कोई तुम्हारा कुछ नहीं पूछेगा। इवन तुम प्रोजेक्ट भी नहीं यहाँ पूछेगा? कोई प्रोजेक्ट भी नहीं पूछेगा, वो तुम मेंशन कर सकते हो। जैसे मेरे प्रपोजल मैंने थोड़ा बहुत मेंशन कर दिया था, डिटेल्स अबाउट योरसेल्फ करके एक सेक्शन दिया, तो उन्होंने टेम्पलेट सी कि ये पार्ट रख लेना, नहीं टेम्पलेट सर, दी थी मेरा बस। क्वेश्चन आगे ये था कि लाइक हाउ टू शो देम दैट वी नो दिस टेक्स्ट by एंड वी making कैन pull डू इट। request by making pull request and having interest in the project and communicating with them। ठीक है, ओके। अब इस बंदे ने यहाँ पे ही मेड दिस पुल रिक्वेस्ट, तो हमें दिख रहा है ही नोज स्टफ। अभी 2-3 दिन पहले ही डिडंट नो इट व्हेन वी वर डिस्कसिंग, ही वाज लाइक सर आई लर्न इट, आई यू नो ट्राई टू फिक्स दिस बग। और what happens is you come to us, see, first you tried your own stuff, you made a few changes, you were like very easy changes, you made them. Now you are like, yeah, hi Akshat, so I'm looking to contribute to the Android app only, so do you have any suggestions for the bugs I could fix? तब I'll give them bugs। ठीक है, अब कुछ कुछ bugs we can give you which we know कि it'll take a while, and we know the coding standard you are on, the like we can judge also that इस बंदे को most probably इतना आता है। So if you are able to fix that, that is a clear symbol for us that this person can learn. So like this person also is this guy I talked to, he learned this stuff and then he made these changes, so it's very visible to me that he's up to learn something, he's ready to learn, so you don't ओके need सर, to मीन्स know कि anything। हाँ, हमें मतलब जैसे लाइक आई नो वेब डेवलपमेंट, आई नो फुल स्टैक, मन स्टैक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शॉर्टलिस्ट 3 to 4 organizations, then I will then we have to select only one project of that organization, or we have to select for one organization 2-3 projects? देखो, बिफोर योर GSoC proposal is selected you can work on anything, ठीक है, बट बेस्ट थिंग वुड बी कि एक पे फोकस रखो, ठीक है। One And organization, one project. हाँ, नहीं, एट द एंड सिलेक्ट तो वन ही होगा, राइट? Yeah, yeah. हाँ, तो वाई वेस्ट योर टाइम ऑन अदर थिंग्स, ठीक है, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव टू सबमिट योर PRs, गेट देम रिव्यू, टॉक टू देम, ऑलरेडी बहुत काम है, यू ऑलरेडी हैव कॉलेज ऑल्सो। One request, sir. Can you explain little bit about that pull request issue that you were telling? देखो, पुल रिक्वेस्ट के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू आर इन ऑन दिस प्रोजेक्ट, ओके, you have to come over here on the project that I'll show you, web development wala project, like listen pains lalo, where Rick is a like part of. I really like his work also, वैसे you can connect with him also, he's like a professional only, okay। So what you have to do is you have to come to a project, you have to fork it, ठीक है, you have to fork it, and like I have currently already forked it, so हाँ, once you have forked this, now clone this, you can use any way, if you want to use the command line, या फिर just copy this link, add it to your IDE and get going, Git make sense? clone. हाँ, git clone करके start the project, open it in your IDE, now pick some issues, like over here listen pains has their Jira also, bug tracker। Okay. हाँ, तो over here you can find the open issues, अब जैसे कि allowing updating usernames when they are changed in music friends, so you can have a look at this bug and you can read it. Over here there can be some work also going on, so if you're interested and you have read it properly first, you understand what is going on, and then you have a doubt, then you can just copy this link, this thing, and then go to the channel and ping, hi everyone, I am this, and I was looking to fix this bug, you can share the link also, and be like but I was facing some issue over here, so I got the development side ready, but I'm facing this issue over here that my project isn't starting up, what do I do then people will be like, maybe if they can be like, hey, thanks for picking this up, this is very high priority bug for us, and let me know what issues you are facing, so maybe you can share your logs, you can talk with them that this is going on and how to fix that, they'll let you know how to fix that, and don't just pick some bug. Like sometimes what happens is people pick, like maybe 4 or 5 people have already picked this up,
and then you go on and fixing it. So it'll be a waste of time for you, because by the time you have fixed it in like 2 weeks, tab tak it's already been fixed. Don't let that happen. What you can do is you can assign it to yourself. You can assign this issue to yourself and then get going. Then you can even talk with see, the best thing for us is just come कि and talk. ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करने के बाद हमें बेसिकली पुल रिक्वेस्ट और बग्स फिक्स करनी है टू शो द टीम और द ऑर्गेनाइजेशन दैट आई एम फिट फॉर दिस. हाँ, ये बात सही है, लेकिन पुल रिक्वेस्ट मारनी है, पुल रिक्वेस्ट फिक्स नहीं करनी है. पुल रिक्वेस्ट होता है जो तुमने क्लोन किया ना, क्लोन कर लो, फिर उसको अपने आईडी में खोल के एक नई ब्रांच बना लो. जैसे अभी हम मास्टर ब्रांच में हैं, तो तुम एक नई ब्रांच बना लो. मतलब हमें अपनी किसी तरह पुल रिक्वेस्ट को उनके कोड के साथ मर्ज करवाना है. ऐसे मत बोलो, मतलब तुम्हें फिक्स करनी चीजें. फिक्स कैसे Okay, करोगे? okay. पुल रिक्वेस्ट मार के करोगे. जी. अब हाँ, तो तुम यहाँ पे फिर पुल रिक्वेस्ट मारो. कोई भी जैसे एग्जांपल ले लेते हैं. वैसे तो तुम लोग अगर बिगनर हो तो तुम्हें तो अच्छा सा मतलब डिस्क्रिप्शन डालना चाहिए, आई हम थिंक. तो सर फर्स्ट ईयर में ही अभी. हाँ हाँ, तो कोई फर्स्ट ईयर कुछ नहीं होता इन सब में. ठीक है, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो. जैसे इस बंदे ने क्या किया कि फिक्सेस दिस इशू, यहाँ पे डायरेक्टली डाल दिया. बड़ा क्लियर है, फंड का क्लियर है कि हमने ये वाला इशू फिक्स कर रहे हैं हम. मेक सेंस. और जी कुछ सर. बड़ा नहीं हो सकता. ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें कुछ बड़ा सा करना है. इट कैन बी इम्पोर्टेंट इशूज. जैसे कभी कभी एक लाइन का भी इशू हो सकता है. यू हैव टू फिगर दैट आउट एंड गेट योर पुल रिक्वेस्ट मर्ज. अब जैसे तूने पुल रिक्वेस्ट मारी, फिर ये मर्ज होती है. एक बार ये रिव्यू होगी, जो भी मेंटेनर है उस टाइम पे वो उसको अप्रूव करेगा, फिर उसको मर्ज करने को रख देगा. अभी तो हम इसको में कुछ वेट कर रहे होंगे कोई अप्रूवल के लिए, बट बेसिकली जो मर्ज वाली हैं, तुम देखोगे यहाँ पे, वो फिर मर्ज हो जाती है. कि तुम्हारा कोड आ गया अब फाइनली. हाँ, जैसे ये देखो, ये अच्छा है. प्रॉब्लम बताई इन्होंने कि यहाँ पे ये क्या है, और इसका सोल्यूशन क्या दिया इन्होंने, फिर एक्शन क्या लिया है. मीन सर ऐसे हमें बताना है कि ये प्रॉब्लम थी, मैंने ये सोल्यूशन दिया, ये एक्शन लिया. हाँ हाँ हाँ, ठीक है. और फिर जब वो रिव्यू हो जाए, जो बंदे रिव्यू कर लेंगे उसे, फिर उसको मर्ज कर देंगे. ये तुम्हें मर्ज 3-4 ट्राई करो कि 3-4 हो जाए, 3-4 मर्ज हो जाए. मेक सेंस. यस सर. ठीक है. और एनी डाउट? हाँ, बोलो बोलो. वो हैंड रेज मत करो, बोलते जाओ एक एक करके. Hello. हाँ Hi, बोलो. hi Akshat. हाय. Akshat, I have a doubt. Can you repeat the procedure of searching? Searching the like you mentioned. Yeah. यार देखो, सर्चिंग इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन यू. बेस्ट थिंग इज जस्ट गो टू दिस पास्ट प्रोग्राम्स, सिलेक्ट योर काइंड ऑफ टेक स्टैक दैट यू आर लुकिंग फॉर. जैसे जावा वाला था, तो जावा यहाँ पे सर्च कर लो, एंड देन लुक ऑन दी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दैट यूज जावा. बट आई वुड स्टिल से दैट दिस इज इंट एक्यूरेट, क्योंकि आई थिंक गूगल गिव्स ओनली एन ऑप्शन ऑफ लाइक 5 टेक्नोलॉजीज या कुछ यहाँ पे डालने को. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि यू कांट मेंशन एवरीथिंग. अगर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सब कुछ होता है उन पे. जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में यू सॉ कि देयर वाज नो मेंशन ऑफ एंड्रॉइड या कुछ, बट स्टिल वी हैड अ प्रोजेक्ट ऑन दैट. तो इट्स नॉट एक्यूरेट पूरा उतना कि सब कुछ आ जाएगा, बट दिस इज अ गुड स्टार्टिंग गाइड फॉर यू. एंड देन आफ्टर दैट, वंस यू हैव द लिंक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, गो देयर. फिर तो पूरा ओपन है. ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, क्या है, इनिशिएटिव्स, ये वो सब पढ़ लो. प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हैं. ये सब तो तुम्हारी एक्सप्लोरेशन है. आई वुड से कि अगर तुम सीरियसली अगर इंटरेस्टेड हो इस पे काम करने को, 1 हफ्ता भी लग सकता है कि तुम सारी ऑर्गेनाइजेशन खोलो, उनका देखो, IRC चैनल ज्वाइन करो. इफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड तो 1 हफ्ता लगेगा. ओके, बट बट उतना ही टाइम लगेगा बस कि ढूंढने में. दैट्स जस्ट फॉर यू. अदरवाइज तो इफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट, सब कुछ आता है, तो कोई भी पिक कर लो कि यहाँ का उठा लिया, ये उठा लिया, यहाँ पे काम कर लिया, वो भी कर सकते हो. ठीक है. वो हाँ बोलो. सर एक और कि जैसे हमारी हम जो इनको अपना फॉर्म या जो हम सबमिट करते हैं वो अप्रैल में हमारा खुलता है. एट विच टाइम वी शुड स्टार्ट सिलेक्टिंग देयर प्रोजेक्ट एंड स्टार्टेड मींस जो आपने बताया कि पुल रिक्वेस्ट मारो, इनकी वेबसाइट पे जाओ, इनके प्रोजेक्ट्स देखो, ये कब से करना होता है? तुम आज से कर सकते हो, आज कर दो. मैंने एक बंदे को वो बात बताई थी GSoC वाली, जब वो कर रहा था जो एंड्रॉइड वाला, उसने एक दिन में पुल रिक्वेस्ट मार दी थी. मतलब आज सुना, आज ही मार दी.
बिकॉज छोटा सा कोई बग मिल गया, इट्स लाइक वो तुम पे डिपेंड करता है ना। देखो कुछ बग्स तो देखो स्टैंडर्ड है, जैसे इसमें भी तुम देखोगे एंड्रॉइड ऐप में आई एम प्रीटी श्योर कि कुछ छोटे छोटे बग्स भी होंगे, यू गेट द पॉइंट, जो कि ट्रैकर में अभी है नहीं। जो यहाँ का ट्रैकर है ना हमारा इशू ट्रैकर, इसमें होंगे नहीं काफी सारे बग्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। बट तुमने क्या किया, यू स्टार्टेड द प्रोजेक्ट, यू लाइक अरे इसमें तो यहाँ पे बग है, बिकॉज यू हैव सम एक्सपीरियंस विद दैट थिंग। सी एवरीवन इज जस्ट लर्निंग। मैंने भी लाइक आई वाज इन माय थर्ड ईयर व्हेन आई वर्कड ऑन दिस, तो मे बी आई कुड हैव मेड सम स्मॉल बग विच यू आइडेंटिफाइड। सो उसमें कोई बड़ा छोटा कोई नहीं है, anyone can find a bug, anyone can solve it. Like for example, when I made my first issue, I was fixing some SDK issues. मेरा जो पहला वाला पुल रिक्वेस्ट था आई थिंक, तो हाँ इट वाज जस्ट लाइक कि API लेवल 30 माइग्रेशंस करी थी मैंने, तो मैंने ये पूरा डाला था, फिर कुछ कुछ फीडबैक आता है, देन यू गो अहेड। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हें क्या चीज़ मिल, जैसे ये वाला इशू वाजंट मेंशन ऑन एनी इशू ट्रैकर, इट जस्ट सेड आई फाउंड इट ऑन माई ओन। तो देर कैन बी इशूज इन एवरी मैनर, यू हैव टू सी कि क्या है। तो तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट आज भी बन सकती है, तुमने आज क्लोन किया आज ही मिल जाएगा तुम्हें। तो बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि बेस्ट प्रैक्टिस इज कि 3 to 4 मर्ज करा लो, बिकॉज उससे मेंटर को भी आइडिया हो जाता है दैट दिस पर्सन कैन लर्न और व्हाट इज देयर आइडियोलॉजी बेसिकली। ओके, so any questions? Sir, does GSoC help me in my professional career, or is it generally only for learning technologies and learning to work with open source? Like see, professionally तो मतलब like I get tons of मतलब startups के वो मतलब offers, ठीक है, मतलब GSoC करके, because there are unlimited people, तो तुम्हें ऑफर मिलेंगे। एंड देन इंटरव्यू में भी इट्स अ वेरी इम्प्रेसिव थिंग टू हैव कि यू वर्कड इन एक GSoC पे, तो इंटरव्यू में करेगा। बट लाइक ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा जो कोडिंग राउंड होता है दैट यू आर गिविंग, या फिर इंटरव्यू वाले क्वेश्चन है वो तो सॉल्व नहीं होंगे ना विद GSoC का टैग। Right, of course, of course. हाँ हाँ, तो Means sir, it generally gives us a edge only. हाँ हाँ एज You can मिलेगा say. एंड में। Sir, So when can do you you start working on open source? आज कर लूँ अभी आफ्टर 30 मिनट्स। तो आई वुड स्टिल से, देखो मैं प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी अपने कॉलेज का, तो मतलब जब तुम्हारी प्लेसमेंट होंगी तो तुम्हें टाइम नहीं मिले, क्या पता जब लाइक व्हेन यू आर इन योर 4th ईयर स्टार्टिंग या कुछ, तो इट बी बेटर कि अभी शुरू कर सकते हो अभी कर लो। आई पर्सनली लव ओपन सोर्स बिकॉज मेरा बहुत काम निकला है उससे। तो इट्स अप टू यू व्हेन यू वांट टू स्टार्ट, एंड इट डज हैव अ लॉट ऑफ एज आल्सो। बट हाँ ये नहीं है कि तुम अपना पूरा टाइम इस पे निकाल दो, फिर मतलब वो भी एक ग्रे एरिया हो जाएगा। बिकॉज मेरे को जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफर मिल गया, बट जिनको नहीं मिला तो इट्स जस्ट दैट दे गॉट द GSoC टैग एंड देन दे आर मूविंग प्रोफेशनली अहेड। तो सबकी जर्नी अलग है, डोंट लिसन टू जस्ट वन पर्सन, ठीक है, मतलब सबको एक्सप्लोर करो, सी व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। आई पर्सनली लव GSoC, तो मतलब बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, स्टाइपेंड भी अच्छा है, फिर ऑफर भी बहुत हो जाते हैं। जिन लोगों के लिए ब्रांच का मैटर आ जाता है ना, उनके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज एक बहुत अच्छा वो टैग मिल जाता है। सर और मतलब जैसे मैं हूँ सर, मैंने मतलब कॉलेज आने से पहले बिल्कुल भी कोडिंग नहीं की, तो अभी मैंने जैसे भी नहीं करी थी, मैंने 2nd ईयर में शुरू करी है। मैंने भी भाई नहीं की थी। तो सर मैं मतलब वही पूछ रहा हूँ कि अगर मैं नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर GSoC ज्वाइन करता हूँ, तो अभी जैसे मैं मतलब कुछ लॉस तो नहीं होगा ना? कुछ लॉस नहीं है यार, मतलब तुम ना भी करो बट लाइक ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर लो। लाइक आई प्रमोट ओपन सोर्स ही वैसे ही, मतलब GSoC तो बस एक प्रोग्राम है, बट तुम ओपन सोर्स में भी कंट्रीब्यूट करो, तुम देखोगे बहुत ही फायदा भी है, प्लस इट इजेज लाइफ फॉर अदर्स ऑल्सो। तो कोलैबोरेटिव वर्क बहुत होता है ओपन सोर्स में। Excuse me, sir. या Sir, I wanted to know ki, like how much skill level I should have, like when I know that I'm ready for the competitions like GSoC. या स्किल लेवल बेसिकली जिस भी टेक्नोलॉजी को यू आर फोकसिंग ऑन, तो उसमें ट्राई कि तुमने 3-4 प्रोजेक्ट्स करे हो,
फॉर योर ओन सेक. इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें Okay. किसी को दिखाना होगा. बट इफ यू नो दैट टेक्नोलॉजी उतना नहीं है. देखो जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे ये वाले भी जो कोड बेसिस हैं, तुम्हें वेब डेवलपमेंट आती है, ठीक है, गुड. तो ये प्रोजेक्ट है, रिएक्ट पे चल रहा है. ये प्रोजेक्ट ले लो तुम, लिसन ब्रेन सर्वर वाले, जिसमें अभी रिक भी काम कर रहा है. तुम्हें रिएक्ट आती है, तुम्हें सब आता है, बट इनका आर्किटेक्चर एंड द वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज डिफरेंट. और हर ऑर्गेनाइजेशन का होता है. यहाँ पे तो हर प्रोजेक्ट्स का भी अलग अलग है. तुम रिएक्ट आती है, तुम्हें जावास्क्रिप्ट आती है, मैं तो कह रहा हूँ उस पर ही बनाइए, बट द वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज डिफरेंट. सो तुम्हें डिसाइड करना है विच प्रोजेक्ट यू वांट टू, एंड उसको समझना है कि हाउ दे वर्क बेसिकली, सो दैट यू कैन एड देयर वर्क ओनली. मेक सेंस? तो वेब डेवलपमेंट में Yeah. अभी जैसे इसमें भी रिएक्ट यूज हो रही है. तो मैं बोलूँ, मैं तुमने कहा रिएक्ट में तुमने प्रोजेक्ट किए हैं, बट जब तुम इस प्रोजेक्ट में आओगे ना, यू माइट फेस सम इश्यूज जो कि नए हैं. यू विल बी लाइक यार रिएक्ट तो आती है, बट इसमें क्यों नहीं हो पा रहा. सो ऐसा नहीं है कि तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, तुम्हें बस बेसिक आना चाहिए. हाँ, जैसे रिएक्ट का अगर घुसना चाह रहे हो तो रिएक्ट तो आना चाहिए कम से कम. मेक सेंस? ये नहीं है कि Yes. सब कुछ आना है. ओके. Sir, if the organization is requiring five things, and I know only two or three, one or two things, then should I join that organization or contribute to that project? तुम जो फीचर मेंशन कर रहे हो अपने प्रपोजल में, कैन यू गेट दैट डन विद दोस टू थिंग्स? यस और नो? No, sir. तो देखो, एट द एंड हमारा गोल सिंपल है. वी वांट द वर्क डन. 3 महीने बाद तुम्हारा, तुम वो कर पाओगे उन 2 फीचर्स से. या तो अगर देखो 2 फीचर तुमने आते हैं, तुमने बता दिया हमें कि आई ओनली नो दीस 2 फीचर्स, तुम उसे लर्न करो बाकी 3 को. एट द एंड हमें फीचर चाहिए. वेरी सिंपल. ठीक है? Yes, yes, sir. है ना? नहीं तो नहीं सर, लाइकली मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा है कि तुम्हें मोंगोडीबी भी आनी चाहिए, पीएचपी भी आना चाहिए, रिएक्ट भी आना चाहिए, और हमारा फीचर का अकेला रिएक्ट ही यूज हो रहा है. तो क्या हमें नहीं, मोंगोडीबी पीएचपी आनी चाहिए फिर के अगर हमारा फीचर रिएक्ट पे ही है तो हम रिएक्ट से काम चला लें? हाँ, तो रिएक्ट से काम हो जाएगा. तुम्हारे प्रपोजल में अगर जो है, प्रपोजल जब तुम दोगे, या फिर इससे पहले आईआरसी पे पूछ लो कि आई ओनली वांट टू वर्क ऑन द फ्रंट एंड, मुझे मोंगोडीबी वगैरह नहीं देखना. तो इज दैट वायबल फॉर मी? अगर नहीं, बंदे ने कहा नहीं, मतलब जो तुम फ्रंट एंड कर रहे हो उसमें हमें थोड़ा बहुत बैक एंड का भी काम कराना पड़ेगा, बिकॉज दैट बैक एंड डजंट एग्जिस्ट फॉर इट. तो वो कहेंगे कि नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट. तो तुम्हारे प्रोजेक्ट में तुमने बोल तो दिया कि तुम ये वाला फीचर लाओगे, बट बैक एंड पे कोई और करेगा ही नहीं, तो वो प्रोजेक्ट तो यूजलेस हो गया ना, मान लिया. तो वो डिपेंड करता है. अगर वो कहें कि बैक एंड ऑलरेडी अवेलेबल है, एपीआईज बनी पड़ी हैं, ठीक है, और तुम्हें बस उसको फ्रंट एंड में चेंज कराने हैं, तो वेल एंड गुड, तुम्हारा काम इजी हो गया. अब उन्होंने भी कहा ठीक है, मतलब फ्रंट एंड करना है, वी वांट दिस प्रोजेक्ट, वील टेक इट. कोई तुम्हें ऐसे नहीं बताएगा कि हाँ हम लेंगे. यू शुडंट इवन आस्क अनटिल अनलेस तुम्हारा जब तक लिस्ट गूगल से ना आ जाए. ऐसा नहीं है कि यू कैन पेस्टर देम. वो तो तुम्हें रिजल्ट वाले दे ही पता चलेगा तुम्हारा सिलेक्ट हुआ या नहीं. What best you can do is you can communicate with them and have a clear mindset of what's going on. सब कुछ आना ज़रूरी नहीं है. You can even learn on the while, but you have to make sure कि तुम convince कर पाओ organization को that you can learn it. Okay? Sir, can you tell other programs other than GSoC in the open source? Outreach करके एक होता है, तो outreach का तुम देख तो सकते वो हो. तो बस फीमेल्स के लिए होता है ना जनरली, जो आउटरीच इंटर्नशिप हो रहा है दिस टाइम. हाँ, वही है, फीमेल्स के लिए ज़्यादा है. बट और प्रोग्राम्स मेरे सुनने में तो नहीं है अभी. ये छोटे मोटे जो गर्ल स्क्रिप्ट करके एक आता है, वो कर लो. अभी रिसेंटली सर एक वो भी है ना, एमएलएच फेलोशिप की, वो अलग चीज है. वो थोड़ी अलग है, मेरे को उसका पर्सनल ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट यू कैन लुक इनटू इट. सब कुछ अवेलेबल है यार नेट पे. Sir, लाइक सर दिस टाइम जैसे 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, एक शॉर्टर टाइम पीरियड के, एक लॉन्गर टाइम पीरियड के. तो हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि शॉर्टर टाइम पीरियड वी शुड चूज ऑफ और लॉन्गर टाइम पीरियड? यार लालच में मत आना, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट. अगर तुम्हारा सही में प्रोजेक्ट Not, बना but at the end, just like you are like आपको ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम करना पसंद है, like you are interested, like but still we want to crack GSoC, right? Like अगर GSoC कर रहे हैं, but still at the back of mind we know that हम लोग को GSoC क्रैक करना है. So at that मतलब उस point of view लेके हम लोग को क्या चूज करना चाहिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और इफ यू आर अ लॉन्ग? बिगिनर तो शॉर्ट ही रखो.
मतलब क्योंकि अगर लॉन्ग Like you already said, we have to learn things like ongoing while the project. We have to learn many things. That's why I'm asking. Like we should take a longer period or shorter period. short period is fine for like from my experience. यूजुअली आई थिंक लॉन्ग पीरियड वो करेंगे जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, ऑर्गेनाइजेशन पहले से काम करते आ रहे हैं. लाइक मे बी रिक कैन टेक अ लॉन्ग पीरियड, उसको काफ़ी नॉलेज है. तो वही है, तुम पे भी डिपेंड करेगा. तुमने लॉन्ग प्रोजेक्ट डाल दिया एंड यू आर जस्ट अ बिगिनर, एक महीने पहले यू इंट्रोड्यूस्ड योरसेल्फ टू अस, तो सेंस नहीं बनता ना कोई कि हम तुम्हारा लॉन्ग प्रोजेक्ट किस बात पे लें. दैट्स अ बिग कमिटमेंट ना, 3 महीने. आई थिंक 3 महीने से ज़्यादा आई थिंक. तो सर आई Sir, हैव thank you. डाउट क्या लाइक है ऋषभ? सो लाइक आपने बोला कि हमें इश्यूज देखने होते हैं जो हम सॉल्व कर पाते हैं. तो मैंने कई बार देखा है लाइक अगर आप ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हो सो ये सबको पता है कि हम अकेले नहीं कर रहे हैं, बाकी बहुत लोग भी आते हैं जो who wish to solve the issue and get selected into GSoC. तो जैसे इश्यू है तो उसमें मतलब 2-3 बंदों ने बोला हुआ है कि लेट मी असाइन दिस इश्यू फॉर मी एंड आई विल वर्क ऑन इट. तो फिर हम डिस्कर्न कैसे करें कि हम कौन सा करें और कौन सा हम दूसरों के लिए छोड़ दें. और ये भी हो सकता है कि जैसे जो हम करने जाते हैं वो कोई पहले से कर रहा है, बट हाँ कि इशू कैसे सिलेक्ट करना है, लाइक मेरा ब्रॉडर क्वेश्चन ये है. ये तुम मेंटर से पूछ सकते हो, जो मतलब बंदे हैं वहाँ के एम्प्लॉयज खुद है, ठीक है. उनसे पूछो, अगर उन्होंने कहा कि ये तो ऑलरेडी समवन एल्स इज वर्किंग ऑन, यू पिक समथिंग एल्स, गो अकॉर्डिंग टू देयर वे. एट द एंड दे विल सिलेक्ट योर प्रोजेक्ट. बड़ा क्लियर है, ठीक है. अगर तुम्हारा क्रैक करने वाला माइंडसेट है कि मेरे को वो करना, तो जैसे जैसा मेंटर बोल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जाओ. नहीं तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ओपन सोर्स तो फिर तो तुम सब कुछ करते रहो. बट अगर वो माइंडसेट है कि ये निकालना है, तब तो तुम्हें फिर जो मेंटर बोले, उन्होंने कहा कि नहीं देखो समवन एल्स इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस, देन यू कैन पिक सम अदर इशू, दे विल सजेस्ट यू ऑल्सो. तुम मुझसे बोलोगे मैं सजेस्ट करके दे दूंगा यार ये वाला पकड़ लो, फिर दूसरा वाला ले लो. ओके तो मतलब IRCT चैनल में जाके बोलना. हाँ हाँ, IRC चैनल पे या फिर जो भी उनका स्लैक है, डिस्कॉर्ड है, जो भी है. ओके थैंक यू सर. हाँ, Sir, कम्युनिकेशन इज द की. excuse me, sir. Sir, I want to ask sir one question, sir. Why we are contributing to the open source and why it is beneficial for us? So हम मतलब कर क्यों रहे हैं ये सब कि हमें इससे होगा क्या? बिकॉज देखो ऑर्गेनाइजेशन, देखो अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, तुम स्क्रीन ही देखो मेरी, तो मैं अब ये भी समझा ही देता हूँ. थोड़ा ओपन सोर्स की तरफ जा रहा हूँ मैं अब, GSoC को छोड़ के. जैसे मैंने ये लाइब्रेरी बनाई थी, ये ओपन सोर्स में क्यों डाली मैंने? बेसिकली ये क्या है, इन ऐप परचेजेस कराती है तुम्हारे ऐप पे. तो एग्जांपल ले लो, ये जो शीट है ना, ये अगर तुम्हें कोई एक सिंगल ऐप में दिखानी है, तुम्हारी 10 अलग अलग क्लासेस बनती हैं, ठीक है. बॉयलर प्लेट कोड है, इसका मतलब कि रिपीटेड कोड है फॉर एवरी ऐप. तुम्हें हर चीज़ के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, सब कुछ 10 बार बनाना पड़ेगा. तो मैंने क्या किया, आई मेड दिस लाइब्रेरी एंड आई पुट इट ऑन ओपन सोर्स, बिकॉज वन नंबर आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, ठीक है. इसमें अगर कल को कोई बग्स आ रहे हैं वो मुझे नहीं पता, ठीक है. मतलब मैंने अपने यूज़ केस से बना दी जो मेरे को ठीक लग रहा है. हाँ, अब इससे क्या हुआ है कि मेरे पास अभी 20+ ऐप्स है खुद के, उस पर मेरे को क्या करना होता है, मुझे बस ये कॉपी करना है, ये 2 लाइन डालनी है और मेरे ऐप में इन ऐप परचेज आ गई. इट्स दैट ईजी राइट नाउ फॉर मी बिकॉज ऑफ दिस लाइब्रेरी. तो कोई भी ऐप में मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, ठीक है. अब मैंने इसको ओपन सोर्स में क्यों डाला? देखो ओपन सोर्स में फ़ायदा क्या है, आई विल शो यू एग्जांपल. जब मैंने ये लास्ट ईयर निकाली थी लाइब्रेरी, इसमें तुम इश्यूज वो देखो, इसमें इशू जो बंदे ने डाला था ना, एक सम जर्मन गाय कमेंटेड ऑन दिस. इसने फ्री में इतने QA निकाल दी, इतने इसने इश्यूज निकाल दिए थे इसमें लाइब्रेरी में. Yes sir. मतलब अब तुम्हें दिख रहा है, अगर मैं खुद से अकेले कर रहा हूँ, मेरे को पता भी नहीं चलेगा इन इश्यूज के बारे में. 1 person can't do everything. आप देखो ओपन सोर्स का फायदा क्या हुआ. Then some people came in. They are like, do you think it is possible to fix them? I can contribute for pull requests, but it would be nice to split those issues into thing and prioritize them. तो इसने कहा, एक और बंदा है, these are some good points Akshat, do you need some help to get these resolved? अब सीन देखो तुम, others also want this library, but उनको भी issues दिख रहे हैं इसमें, ठीक है. उनको क्या करना है, उन्हें भी ये बस कॉपी करके पेस्ट करना है बस, ताकि उनके ऐप में भी आ जाए, उनका भी फायदा हो रहा है और दे फिक्स दिस. अब जैसे तुम इसमें कॉन्ट्रीब्यूटर्स देखोगे, ये बंदे हैं. सो मेरे को फ्री में
दे हेल्प्ड माई लाइब्रेरी ऑल्सो, जो इश्यूज थे वो भी फिक्स करते, बिकॉज मैं तो ऑलरेडी यूज़ कर ही रहा हूँ इसे अपने ऐप्स में, तो Yes, वो sir. इश्यूज मेरे लिए फ्री में फिक्स हुए, और उन्होंने भी ये लाइब्रेरी को फोक वगैरह किया या फिर कॉपी करके अपने ऐप में डाल दिया। तो करंटली एक ये ऐप है, मैं देख रहा था इसके कितने डाउनलोड्स हैं, इसके हैं 10 मिलियन डाउनलोड्स एंड इट इज़ यूजिंग माई लाइब्रेरी। Yes. ठीक है, और वीकली इसमें देखो, वीकली मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसमें कितने डाउनलोड्स आते हैं। इस लाइब्रेरी में मंथली देखो 500 डाउनलोड्स आ रहे हैं, 500 लोग इसको यूज कर रहे हैं। मतलब आई कैन प्राउडली से कि कम से कम ये वाला जो कोड है ना, इसको अराउंड 200-300 ऐप यूज करे प्ले स्टोर पे, तो Yes, sir. सबका फायदा हो रहा है। तो मैं इस वे में देखता हूँ ओपन सोर्स को, और मेरे को तो बहुत हेल्प हुई है। वंस यू स्टार्ट बिल्डिंग लाइब्रेरीज या फिर खुद के कुछ प्रोजेक्ट्स ना, तो पीपल कम इन एंड दे गिव फ्री थिंग। अब जैसे जैसे जो ओपन सोर्स में ऑर्गेनाइजेशन आती है जीसॉक में भी, दे आर बेसिकली नॉन प्रॉफिट, they don't have the model ki we will hire 40 people and get working। जो प्रोजेक्ट्स और जो डेटा अवेलेबल है, जैसे मैं तुम्हें अपना यूज केस बताया था कि मैं म्यूजिक ब्रेंच पे क्यों आया था, बिकॉज आई वांटेड सम डेटाबेस जिससे मुझे फ्री में वो मिल पाए, फ्री में मुझे वो मिल पाए डेटा की आर्टिस्ट कौन से, जैसे मैंने लिंकिन पार्क डाला, मुझे उनके बारे में सारे कितने कितने सॉन्ग्स हैं उनके, उनके कौन से फेमस सॉन्ग्स हैं, रेटिंग्स क्या क्या मिल रखी हैं, IMDb टाइप का अगर मुझे बनाना है फ्री में, मुझे कौन दे रहा है उसके लिए डेटाबेस? कोई नहीं दे रहा। अभी स्पॉटिफाई वगैरह चार्ज करेगा। ये Yes, sir. डेटाबेस मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ और मेरे को फ्री में भी मिल रहा है। इवन यू कैन यूज दिस। तुम अपने एक ऐप बना रहे हो, सो दैट इज वाई वी वांट टू प्रमोट ओपन सोर्स, बिकॉज ये ओपन है एंड इट इज अवेलेबल टू एवरीवन, प्लस ये नॉन प्रॉफिट है, तो इट इज फॉर एवरीवन बाय पीपल, वो वाली लाइन ले लो तुम। मेक सेंस? तो अगर ओपन सोर्स नहीं होगा तो ये दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट वोंट एग्जिस्ट। कल को तुम्हें कोई ऐप बनाना हुआ, तुम क्या खुद से ये बनाओगे? तुम, मेरे पास तो नहीं है सारी इन्फॉर्मेशन की लिंकिन पार्क के बारे में क्या है, मुझे तो एक छोटा ऐप बनाना है जिसमें मैं लिस्ट करा पाऊँ उनके गाने। आई डोंट हैव अ डेटाबेस वेयर दीज एग्जिस्ट। ओपन सोर्स इज मेकिंग दिस पॉसिबल। इवन गूगल यूजेज इट। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, गूगल इसे अपने गूगल मेटाब्रेन्स को पैसे देता है। उनका ये वाला इनकी तुम नॉर्मल वेबसाइट देखोगे सपोर्टर्स में, तो गूगल यूजेस म्यूजिक ब्रेंच डेटा टू पॉपुलेट द म्यूजिक डेटा इन द नॉलेज ग्राफ। इवन माइक्रोसॉफ्ट यूज करता है। बिंग वगैरह में तुम जब गूगल सर्च करते हो कोई भी म्यूजिक की चीज को रिलेटेड, वो डेटा कहाँ से आ रहा है? म्यूजिक ब्रेंच से आ रहा है। ओके, तो Yes, sir. ओपन सोर्स का बहुत यूजफुल है। मैं तो बल्कि कहूँगा कि इट्स द एक्चुअल वे ऑफ लिविंग। बाकी कंपनीज बाय थिंग्स पैसे के नाम पे। तो सर मतलब आप जो बंदे होते हैं वो ठीक करते हैं कोड और वो आप अपने कोड में मर्ज कर लेते हो। हाँ, तो हमें फ्री में मतलब काम मिल रहा है ना। वी डोंट हैव टू हायर समवन टू गेट दैट वर्क डन। तो सर मतलब आपको पता क्या चलता है कि वो कोड जो उसने लिखा बंदे ने वो सही लिखा है या नहीं लिखा है? अरे तो वी आर ऑल्सो डेवलपर्स, वी रिव्यू इट। ओके ओके। हाँ हम लोग हैं ना, तो सर आपने लाइसेंस कैसे डिसाइड किया उस लाइब्रेरी के लिए अपनी? यार देखो, मैंने तो GNU GPL लाइसेंस लिया था, बिकॉज आई डोंट वांट एनीवन टू यूज माय लाइब्रेरी। मतलब देखो, तुम्हें दिखाता हूँ, टाइप ऑफ लाइसेंसेस डिफरेंट होते हैं। GNU GPL वाला जो लाइसेंस होता है ना, तुम्हें दिखाई देता हूँ, पढ़ लिया करो ना तुम लाइसेंस के बारे में। देखो, यहाँ पे तुम जाओगे, इनसाइट्स पे होता है ना शायद से, कम्युनिटी कम्युनिटी होता है, क्या होता है, कंट्रीब्यूटर्स होता है, जहाँ पे लाइसेंस का दिखता है। कम्युनिटी पेज में होता है यार। सर होता तो वो कोड में ही है, और राइट साइड, राइट साइड। नहीं नहीं, ये तुम्हें सर वो अलग में रीड मी के नीचे। जाने एक नहीं वो बनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कह रहा मैं, वो तुम्हें वो दिख जाएगा, टिक मार्क्स, वो तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ मैं। एक सेकंड रुक जाओ, मुझे 1 मिनट दो। जब तुम नया प्रोजेक्ट, ये शायद इन्होंने GUI चेंज किया है यहाँ। हाँ ये है ना, ऐड अ लाइसेंस। हाँ, यहाँ पे जाओ तुम, अगर ये देखो अब तुम,
यहाँ से ये तुम चीज़ें पढ़ लिया करो, इसमें सब दे रखा है कि ये परमिसिबल लाइसेंस है विच हुज मेन कंडीशन रिक्वायर प्रेजेंटेशन ऑफ कॉपीराइट एंड लाइसेंस नोटिसेस। तो इसमें कंडीशन देखो, कंडीशन ये है कि तुम्हें लाइसेंस और कॉपीराइट नोटिस देना पड़ेगा। कोई भी इसमें चेंजेस किए लाइब्रेरी में, मतलब लोग क्या करते हैं, फोक कर लेते हैं और उसे अपने प्रोजेक्ट में डाल देते हैं। तो इसमें लिमिटेशन क्या है कि इसमें ट्रेडमार्क यूज दिखाना पड़ेगा। एक ये वाले में GNU GPL सबसे ज़्यादा मतलब रिस्ट्रिक्टिव लाइसेंस है, बिकॉज कल को तुम अपने ऐप में मेरी अगर लाइब्रेरी डाल रहे हो तो यू हैव टू गिव मी क्रेडिट। तुम अगर इंस्टाग्राम पे भी देखोगे, इंस्टाग्राम पे तुम अगर अबाउट सेक्शन वगैरह पे जाओ, ओपन सोर्स लाइसेंसेस करके एक सेक्शन है, यू हैव टू प्रोवाइड दैट इन योर ऐप कि किसके किसके कॉपीराइटेड कोड है वो। तो वो तुम्हें GNU में डालना पड़ता है। अगर MIT लाइसेंस तो कुछ नहीं है, MIT लाइसेंस में तुम्हें कोई वो लाइबिलिटी वगैरह का मतलब जैसे कमर्शियल यूज आराम से होता था, तो मॉडिफिकेशन जो करना है कर लो, डिस्ट्रीब्यूट करना है कर लो, यू कैन रीड अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, तो GNU GPL तो सबसे रिस्ट्रिक्टिव होता है, मतलब मेरे को जितना देखा है, तो उन्हें मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा अपने ऐप पे, अदरवाइज आई कैन फाइल अ केस। तो ये सब तुम यहाँ से पढ़ लो, बड़ा इजी पड़ेगा तुम्हारे लिए। ओके ओके सर, ओके। ओके, आई एम डन फ्रॉम माई साइड। आई थिंक तुम्हारे लिए थोड़ा इंसाइटफुल रहा होगा। कोई एक दो डाउट्स हैं तो कर लो, देन वी लर्न। In short, summarize कर सकते हो? ऑर्गेनाइजेशन, Like all you explained about organization pull request, इस सबको summarize कर सकते हो या please? टू बी ऑनेस्ट तुम्हें यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे रोड मैप वगैरह के। मेरा फंडा सिंपल है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन पकड़ो, उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करना, हैंड्स ऑन करो, पुल रिक्वेस्ट मारो, उससे उन्हें दिखेगा कि तुम काम कर रहे हो। तो तुम्हें सेटअप करना पड़ेगा पहले। वंस यू सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट भी सिलेक्ट करोगे तुम, प्रोजेक्ट कौन सा है कि हाँ आई वांट टू वर्क ऑन दिस लिसन ब्रेन्स प्रोजेक्ट। फिर तुमने उस पर अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया, तुम्हें मे बी सेटअप में ही दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों में टाइम नहीं वेस्ट करना है तुम्हें। वी वॉन्ट यू पीपल, जैसे अभी हम भी काम कर रहे हैं, वी अप्रिशिएट योर हेल्प। ठीक है, बिकॉज हम जैसे 10 एम्प्लॉय हैं, हमारे पास 7 प्रोजेक्ट्स हैं, तो काम बहुत है। इवन वी वांट टू मेक सम अदर चेंजेस, बट कुछ कुछ ब्लॉकर चेंजेस की वजह से हम लोग टाइम ले रहे हैं कि अगर हमें एक नया फीचर लाना था, वो अभी हम प्लान करे थे 2 महीने में लाने को, बट कुछ कुछ बग्स आ गए, उन्हें फिक्स करने बैठ गए, तो वो फीचर आने में 1 साल लग गया। We don't want that. If you can fix these bugs for us, or if you can suggest some new changes, we want that. तो तुम्हें आना है, सेटअप में कोई भी दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, सबसे सीधे उठा के IRC चैनल पे आओ कि आई हैव दिस प्रॉब्लम। मतलब ये नहीं कि वेयर शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, ये सब वहाँ पे नहीं पूछना IRC पे। IRC पे आते तक यू हैव टू बी श्योर कि यू आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट और तुमने इसको स्टार्ट करके देखा है। ठीक है, ये नहीं कि आई वांट सजेशंस, ये वो, ये नहीं करना है वहाँ पे आके IRC पे, इसका इंटरेस्ट नहीं है किसी को। तुम आओ, हैंड्स ऑन आओ। तुम्हें अगर सेटअप में भी डिफरेंट मतलब दिक्कत आ रही है, तुम्हें क्लोन में भी दिक्कत आ रही है, तो भी तुम बता सकते हो। ठीक है, उन सब के लिए वी आर ऑल रेडी। तुम आओ IRC चैनल पे, बताओ कि मेरे को ये दिक्कत है, देन Means उनको explain करना है कि मुझे ये problem आ रही है, आप ये problem बताओ ठीक कैसे करें? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद यू कैन स्टार्ट डिस्कसिंग, वंस यू आर फेमिलियर, तुमने हैंड्स ऑन कर लिया, एक दो मे बी फीचर वो फिक्स किए या फिर बग्स फिक्स किए, देन यू कैन स्टार्ट आस्किंग कि हाय अक्षत, वेयर शुड आई वर्क ऑन एग्जैक्टली, वेयर आर यू गाइज इंटरेस्टेड इन, सो दैट मैं फिर तुम्हें बता सकूँ कि हाँ देखो जिफ्तेश, मतलब ये चीज़ें आर इम्पॉर्टेंट, सो इफ़ यू कैन वर्क ऑन दीज थिंग्स वी विल बी वेरी ग्रेटफुल। उससे हमें तुम्हारा भी वो बिहेवियर दिखेगा। देन वील बी लाइक हाँ यार जितेश है, मतलब ही इज हेल्पिंग अस अ लॉट, वील ऑल्सो हैव मीटिंग्स, वील डिस्कस अबाउट यू कि जितेश इज वर्किंग गुड फॉर अस, तो विल बी वेरी फ्रूटफुल इफ हिज प्रोजेक्ट इज सिलेक्टेड। तो कल को तुमने अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट मारा है तो वील बी लाइक विल डिस्कस कि हाँ ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, तो लेट्स गो अहेड विद इट। ओके, So I'm assuming that there are no more queries. So that's it from all of you guys, I think. So thank you so much, Akshat, and I'm so glad that you provided insight and all, and I'm also glad that you liked my work in MetaBrains. So yeah, it's very fun, and so you guys were asking कि GSoC के अलावा और क्या है?
So I wanted to say that PClub also conducts PSOC, right, where we aggregate different open source projects, where we also bring our own open source projects and we send the whole thing to somebody else. Someone needs data. It's only limited to POC. People from different parts of India come and we work together. And also this PSOC we would have Web3 projects. Rick, your voice is lagging actually. Can you fix? Am I audible now? You're audible, Yeah. but it's lagging. Oh, okay. Is it better now? Yeah, it's better now. Yes. So what I was saying was that that in PSOC we would have Web3 projects, basically NFT and all. So if you guys are interested, you can start working, and basically regarding learning skills, right? So I will just take a bit of time. So we have this mentor in MetaBrains who goes by the name Monkey, right? So when I started, I didn't know TypeScript. I didn't know any of the testing library. I just knew basics of React, right? But they were so patient with me that I ended up implementing a whole page that connects basically music brains with listen brains. Love So that page. after that, thank you so much. So like when I did that whole PR, I came off more skilled, right? So see GSoC as something where you can amp up your skills, learn to collaborate, get better in Git and all, right? It's not something to quote unquote crack, right? So yes. So yeah, I guess that is it. Thank you so much, man. It was a pleasure to host you and all. Thank you, guys. Have a nice day. Okay. Thank you, sir. Yeah, thanks a lot, Akshat. Thank you, sir. Yeah, and you can reach out to me if you have any queries. I've shared my GitHub thing, so you can find all my accounts over there. And guys, don't leave the meeting. We have a surprise for you. Okay, enjoy the surprise, guys. I can say. Okay, Thank bye bye. Bye. So, guys, we will be releasing our recruitment form, and I'm sending form in the chat. Yeah. So you can fill out the form, and the last date is 26 Feb, and we will send the message in the respective groups as well. So you can fill out it there also. Anything else, Rick? I want to edit something that regarding the form and the application, that if you have a skill that you want to bring out in the club and you don't find in the form, then in the below there is the space where you can add that, and yeah, you can add the skill. So I guess that is it. Yeah, just wait a minute. I'm adding another section there. So we can close the meeting. Thank you guys for joining the session. And from tomorrow we will be having a C++ and DSA session. So please join.